Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about sickle cell anemia. Hemoglobinopathy, it is a specific term means disorders जो hemoglobin की abnormality से cause होते हैं, like hemoglobin की abnormal synthesis की वजह से जो disease cause होते हैं that are known as hemoglobinopathies. Sickle cell anemia and hemoglobin C are the classical example of hemoglobinopathies. Whereas thalassemia is a quantitative disorder means हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम हो जाती है. इस पार्ट में हम सिकल सेल एनीमिया डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट थैलेसेमिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिकल सेल एनीमिया. एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से ये सबसे कॉमन डिसऑर्डर है जहां नॉर्मल कॉन्केव आरबीसी का शेप क्रिशेंट शेप का हो जाता है और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है. Now let's talk about its occurrence. सिकल सेल एनीमिक पीपल सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं और मोस्टली ब्लैक पीपल्स में नोटेड है. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन 500 न्यू बॉर्न ब्लैक में से 1 ब्लैक इनफैक्ट अफेक्टेड होता है सिकल सेल एनीमिया से. Now let's talk about what causes change in the shape of RBC. As you know, normal hemoglobin contains 2 alpha and 2 beta chains. सिकल सेल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन म्यूटेटेड हो जाती है जो शेप को अफेक्ट करती है. म्यूटेशन बीटा चेन में म्यूटेशन अमाइनो एसिड के रिप्लेसमेंट से होता है. ग्लूटामेट दैट इज प्रेजेंट ऑन द 6th पोजीशन इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन में रिप्लेस हो जाता है वेलिन से. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिससेंस म्यूटेशन. सिंगल न्यूक्लियोटाइड दैट इज थाइमीन रिप्लेस होता है एडेनिन से एंड दिस एरर कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल्टर कोडॉन दैट इज GUG in place of GAG. Now let's talk about homozygous and heterozygous sickle hemoglobin. When both beta chain get affected with the mutation, the condition is known as homozygous. And when only one chain of beta chain gets mutated and other remains normal, the condition is known as heterozygous. Heterozygous HBS type of humans live normal life without any symptoms for sickle cell anemia, while homozygous HBS type of human is affected with the disorder because sickle cell anemia is an autosomal recessive disorder and only expressed in the homozygous condition. Let's discuss about the abnormalities that is associated with this disorder. First is lifelong hemolytic anemia. Sickle cell RBCs are very weak and fragile. That's why इनका ब्रेकडाउन इजिली हो जाता है और इनफ अमाउंट में आरबीसीज प्रेजेंट ना होने की वजह से ह्यूमन लाइफ टाइम एनेमिक रहता है. द सेकेंड इज टिश्यू डैमेज एंड पेन. कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से टिश्यू तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है एंड टिश्यू डैमेज, इन्फ्लेमेशन और पेन जैसे एडिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. थर्ड इज इन्फेक्शंस. टिश्यू डैमेज एंड अदर काइंड ऑफ सिम्टम्स से इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. Fourth is premature death. In maximum cases, individuals below the 20 years get die. Let's see mechanism of sickling. Glutamate is a polar amino acid and valine is a non-polar amino acid. और जब एक polar amino acid का replacement एक non-polar amino acid से होता है तो deoxygenated फॉर्म की solubility कम हो जाती है. However, oxygenated फॉर्म की solubility अफेक्ट नहीं होती है. Let's discuss how sticky patches are formed and leads to the formation of deoxyhemoglobin. Glutamate की substitution से बीटा चेन के outer surface पे sticky patches का formation होने लगता है. This is present only in the sickled hemoglobin, not in the normal, that is adult hemoglobin. There is a receptor present on the deoxyhemoglobin that is complementary to the sticky patches that is present on the another deoxyhemoglobin. The point is to be noted, there is no any sticky patch that is present on the normal hemoglobin. Mutation in the normal hemoglobin when leads to the formation of sickled hemoglobin, there is a sticky patch gets present on the outer surface of
hemoglobin. And when it's changed into the deoxyhemoglobin, its complementary sites binds and polymerization leads to the formation of long chain of molecule of deoxyhemoglobin. That's why its polymerization leads to the formation of long fiber of secant deoxyhemoglobin. And these fibers alter the shape of erythrocytes to crescent shape. While in case of oxyhemoglobin, complementary receptors are masked, that is ऑक्सीहीमोग्लोबिन्स पे भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो कवर अप होते हैं एंड पॉइंट टू बी नोटेड स्टिकी पैचेस आर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीहीमोग्लोबिन बट रिसेप्टर्स के कवर्ड होने की वजह से पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्टिकी पैचेस एब्सेंट होते हैं सो कंक्लूजन इज इरिथ्रोसाइट्स की सीकलिंग डीऑक्सीहीमोग्लोबिन के पॉलीमराइजेशन से होती है अगर सीकल हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजनेटेड कंडीशन में मेंटेन करें तो सीकलिंग अवॉइड की जाती है Citrates provide resistance to malaria, which is a major cause of death in the tropical areas. Malaria is a parasitic disorder that is caused by Plasmodium falciparum. Malarial parasite spends a part of its life cycle in erythrocytes. Increased lysis of sickle cell interrupts the parasitic cycle. No, sickle cells are very fragile and it have shorter lifespan than normal erythrocytes and that's why it interrupts the parasitic cycle. A recent study indicates malarial parasites increase the acidity of erythrocytes, that is its pH down by 0.4. Lowered pH increase the sickling of erythrocytes to about 40% from the normal occurring as 2%. That's why entry of the malarial parasite promotes the sickling and it leads to the lysis of erythrocytes. Concentration of potassium ion is low in the sickle cell, which is unfavorable for the parasites to survive. Sickle cell traits appear to be an adaptation for the survival of individuals in malaria-infested regions. Let's see diagnosis of sickle cell anemia. First is sickling test, in which examination of blood smears get done by addition of reducing agents under the simple microscope where sickling erythrocytes can be detected. Electrophoresis. Electrophoresis get done under the alkaline pH of 8.6. Normal hemoglobins move faster than sickle cell hemoglobin. Sickle cell hemoglobin moves slowly towards anode than adult or normal hemoglobin because sickle cell hemoglobin moves slowly due to the less negative charge that is caused by the absence of glutamate because glutamate carry negative charge. Management of the sickle cell disease. Treatment with sodium cyanate control the sickling of erythrocyte. It increased the affinity of sickled hemoglobin towards O2 and lowered the formation of sickled deoxyhemoglobin. But some side effects are observed in the PNS. Severe anemia requires repeated blood transfusion also sickling. Fetal hemoglobin also reduces sickling. Thank you for watching.